slow down or semi-retire after 70, but you seem blossoming. How come? Yeah, perhaps, I started late. Actually, I started writing poetry at the age when people stopped writing poetry. I was 31 when I started writing poetry. Most of the poets, if you in India or say in Europe, you will see that most of their writing is in their 20s. But as far as the script is concerned, yes, when Sholay or Diva were released, I was exactly 30. It means I had written those scripts in my 20s. But as long as you're alive, you're thinking. Alive, it's not means you're breathing. But you're alive in the actual sense, yeah. Somebody had asked me what epitaph you would suggest for yourself. So I said, although I am not going to have a grave, but it doesn't matter. He was alive till he died. So now we open it to the audience. You started writing poetry at 31, it's too late. I had a long, बहुत पुरानी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी कवि या पोएट बनूं और मैंने हिंदी उर्दू की भी काफ़ी जानकारी ली थी अपने फादर से लेकिन बाय द वे मेरा नाम अमिताभ सक्सेना है तो नाम तो सुनो तो अब मैं 55 का हूँ अब मैं चाहता हूँ कि पोएट बनूं तो आपके तरफ से क्या एडवाइस होगी My best wishes and all my sympathy. अरमान दिन में पूरा है भी करी डाली पोएट्री ऑनेस्टी के बिना नहीं हो सकती है पर अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे जैसे आपको वो याद है क्या वो किसी और को हर्ट भी जब आप लिखेंगे और वो पढ़ेंगे क्या पता वो आपके किसी और तरीके से याद हो और उनको हर्टफुल हो तो आप उसका कैसे ख्याल रखें नहीं देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लिटरेचर टेल्स यू टू थिंग्स particularly the prose novel short story plays that how different people are and at the same time how similar they are so whatever you will feel emotionally or intellectually believe me you will not be the only person in the universe who thinks or feels like this वो सरगम में है तो 7 स्वर तो वो कहीं वो सुर जो है कहीं ना कहीं और भी किसी दिल में बजे हुए हैं तो दैट इज हाउ वी गेट कनेक्टेड बाकी ये कि यस इफ यू आर सेइंग समथिंग आई मीन पर्टिकुलरली अ थॉट इमोशन आर डिफरेंट बट अ थॉट कैन हर्ट समबडी और समबडी विल डिसएग्री विद दैट बट आई सपोज इन I had this debate with a friend and we were talking about, I said that it is easier to create art when someone's in pain. It just comes more easily as an amateur writer. But to somebody who does it so well, do you also think that it is easier to write or express when it comes from like a darker place, or do you think it's all the same? easier in which situation, from which place? When someone's in pain. Darker phase, pain. Yeah, but pain is a Like something sad. If you want to express something sad, I think it's easier than. I got your point. But when you are concerned, when you are feeling something, and it is not necessarily only about yourself, you can feel about others, about your society, about your country, about the world, suffering of the people, anything which touches you. Why would you write poetry if everything is hunky-dory? And so what is the reason? Something has moved you, whether it has made you very happy or excited, or it has made you think about something, or if you feel concerned, you are bothered, you are worried, you are sad, whatever. There has to be some instigation,
some moment in the ocean of your feeling that will cause this. Otherwise, you will sit pretty. Yes, but sad, not in. There is a difference. Father had named you Jadu, and today you have come here with this book Jadu Nama. I am also a Jadugar. Yesterday I did a magic show over there in the Kids Fest. I am also an author. I have written this book, The COVID Thief, and I'd like to come up there and show you. अच्छा लगा कि मैं यहाँ आज आई और आपसे मिली। आपने कहा कि 30 की उम्र में आपने लिखना शुरू किया। मेरी माँ ने Poetry. 63 की उम्र में लिखना शुरू किया और 2 किताबें पब्लिश की हैं। तो 63 में भी स्टार्ट करना शायद बहुत लेट नहीं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिल रही हूँ और ये किताब क्या मैं आपको दे सकती हूँ? मैं जब ये खत्म हो जाए दीजिए. This boy has already upstaged me. Poetry comes from the place wherein your thoughts are like, sir. So sometimes people ask me like, do you go through all these pain or experiences where you're writing like this? So how do I answer them? Because I haven't gone through those experiences or I didn't go through the pain or something. So my poetry comes like wherein I put my thoughts and then the lines come out. So how do I tell them that no, these are not my experiences or I didn't go through all of it? So, what do you think, sir, is the answer for that? When you're telling On a serious note, I mean, I think all kind of creativity is a very complicated process. Sometimes I feel that it is some kind of exercise in schizophrenia. Because to be creative, you need two things which are ostensibly totally incompatible. Passion, emotion, feeling, fantasy, imagination. And on the other hand, all form of art have a craft. And the craft is surgical, objective, clever, and ruthless. So now, whatever you are writing a poem, making a painting, creating a tune, whatever, both these parts of your brain, which are, I mean, if you think they are going in opposite direction, work together to create something. Every art has a craft also. So while you are writing a poem, or writing prose, a short story, or dialogue of a film, you are living that moment on one side. Sometimes when somebody is writing an emotional poem or emotional prose, the person will get tears in his or her eyes. But at the same time, there is somebody within that mind, within that person, who is objective and looking at it very cleverly. Say, no, don't go in that direction. There you won't have enough space. Turn this way. This will be more touching. This word will go to people that pierce people that. This is the word you should use. So the craft has to be impacted. Of Urdu in India. But the fact is that the future of all the indigenous languages is under threat at the moment. I'm afraid languages don't survive on their literature, on their poetry, on their prose, on their novels, on their plays.
languages survive on their economic utility. One question. Yeah, but what is happening that slowly in this so-called, let me use the cliche of the global village, the utility of indigenous languages is shrinking. You can fight, you can walk against the wind, like you can see that the regional language is written on every board, and whether it is a hotel or a restaurant or a mall and so on, it means there has been an instruction. You will have to write this also. It doesn't come naturally, but all right, many states of India, such things are happening. But the fact is that as long as you will not create the economic utility of the language, it won't survive. It doesn't happen. I mean, when there was economic utility of Arabic, I mean, you go on Oxford Street in London, every board had Arabic on it. People are learning Chinese in USA. So the moment you feel that by learning this language, a society or a segment of society can improve its economic condition, they will learn. माँ बाप अपने बच्चों को, बहुत कम माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को लिटरेचर फॉर लिटरेचर से पढ़ाते हैं, ऐसे भी हैं, थैंकफुली आई हैड सच पेरेंट्स और सच फैमिली. मगर होता ये है कि आप अपना एक एवरेज पेरेंट को बोले आई वांट टू बी ए म्यूजिशियन, वो कहेंगे भाई क्या तुम पागल हो बेटा, अभी तुम तैयारी करो IAS में बैठो. ये कौन है या तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर, और इंजीनियर बनना तो सिविल इंजीनियर बनना, उसमें ज़्यादा बेईमानी के चांसेस हैं. तो दैट इज हाउ पेरेंट्स थिंक. तो वो जो आप ये बोले कि शायरी सॉन्ग्स लिखे हैं, लेकिन एक जो गाना है संदेश से आते हैं जी, वो जो गाना जब आप लिख रहे थे, एक शब्द में या फिर एक सेंटेंस में आप बताएंगे कि वो बात नहीं है, ये नहीं कही गई है, तो वो जो कुछ 10 बार कहा गया उसे कहने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं तब तक लिखता ही नहीं हूँ. दैट इज व्हाई माय स्पीच इन माय लिटरेरी राइटिंग इज वेरी स्लो. ऑन द अदर हैंड दिस इज कमर्शियल राइटिंग. आई मीन वन pays me for writing it. It's a different ball game. You have a deadline, the producer has booked the recording theatre, you have the date of a busy playback singer, that day that singer is available and so on. So, first of all, I don't look down upon commercial work. You can make a very good calendar and make a very bad painting. You can make a very good film song and a third grade ghazal. So it is not the genre which describe or which can decide the level of the writing. Commercial writing can be as good as any other form of writing, and any other form of writing can be as bad as commercial writing. तो वो genre decide नहीं करता स्टैंडर्ड का. शैलेंद्र, साहिर, उनके कितने गीत हैं, मैं आपको ऐसे सुनाऊं बिना गाए और आप कहेंगे वाह व्हाट पोएट्री. तो वो जो है ये संदेश से आते हैं. ये जो फिल्म थी बॉर्डर, उसमें ये सिचुएशन थी वेयर पीपल आर थिंकिंग ऑफ देयर होम, और उनको जब लेटर्स आए हैं तो उनको अपनी फैमिली अपने सब याद आता है. तो दिस वाज द सिचुएशन, एंड देन यू पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन. Dialogue writer or a lyric writer is in a way a latent actor. You have to put yourself in that situation. I mean, when you are writing a song of love, you may not be loving that time, and or pining, you may not be pining for anybody. But like an actor comes in his limousine, gets down, and wears clothes of a mill worker, and whose mother has died, and he sits down, and this lady whom he hardly knows, he pretends that she is his mother, and he cries. So, what is the difference between a good actor and a bad actor?
there is a total suspension of disbelief in this actor, and he convinces himself that this is the situation and this is woman is my mother and she is dead. तो उसी तरह से जब हम गाना भी लिख रहे हैं तो जो भी हमें सिचुएशन दी गई वो सिचुएशन से आप टोटली आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं then you will be able to write a proper song. यहाँ इसलिए आसान था मेरे लिए कि कंपैरेटिवली कि ये सिचुएशन मेरी वैल्यू सिस्टम या मेरे बिलीफ के साथ थी कि वो जो फीलिंग फॉर द कंट्री, फीलिंग फॉर द नेशन जो है वो वैसे ही हमको है. मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि हमारे घर में 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा अलग अलग तरह की सुनाता हूँ ताकि आपको दोनों तरह की चीजें मिल जाए. एक पोएम है ये खेल क्या है, शायद इसमें आपको अपने सवाल का जवाब मिले. मुखालिफ मीन्स अपोनेंट. मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है. मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है. मगर मैं कब से स्याह खानों सफेद खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं. मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या हैं. अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये जरूरी न वो है. अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है तो खेल क्या है. मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो. ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं प्यादे और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे. मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है. ये जंग है जिसको जीतना है. ये जंग है जिसमें सब है जायज. कोई ये कहता है जैसे मुझसे एक दो सुनाइए मुझे आपको ताकि उसके बाद आपकी हिम्मत ही ना पड़े. तो दूसरी है आंसू. You know, when we see a movie, read a novel, read a poem, listen to a song, so often you get tears in your eyes. किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है. ये आंसू क्या है. ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का. ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस सिंसेरिटी की एक रोशनी का. ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, सेंसिटिव हार्ट. मेरे सीने में एक हसास दिल है जो कि किसी की दिलदोज दास्तान जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है. पराए शोरों में जल रहा है, पिघल रहा है. मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं ये दास्तान तो अभी सुनी है. ये आंसू भी क्या अभी ढला है. ये आंसू क्या ये मैं समझूं पहले कहीं नहीं था. मुझे तो शक है कि ये कहीं था. ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें, ग्रेवयार्ड्स ऑफ ड्रीम्स. ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं. जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है. जहां से आ गए हैं उलझनों के घनेरे जंगल. ये वक्त क्या है. ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है. ये जब मैं गुजरा था तब कहां था. कहीं तो होगा. गुजर गया है तो अब कहां है. कहीं तो होगा. कहां से आया किधर गया है. ये कब से कब तक का सिलसिला है. ये वक्त क्या है.
ये वाकई हादसे तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every pain and every pleasure, every joy and every sorrow, ये वाकई हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक कज़ियत, हर एक लज़्ज़त, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, उस जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का टच का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, all feelings, all emotions, ये जैसे पत्ते हैं, वैसे पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और मैं उछल दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, ये किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है,